and second one is going to be rotational motion of the wheel. ठीक है? So rolling is equal to translational motion plus rotational motion. हाँ, यहाँ पे लिख रहा हूं, बाद में भी लिखूंगा दूसरे वाले पे। और ये बेसिकली ग्राफिक्स में देख करके समझना आसान होता है, इसलिए दिखा रहा हूँ। अदरवाइज हाथ से करना भी, मतलब करके फिर दिखाना पड़ता है, अगर मिलता नहीं अप्रोप्रिएट तो। क्या हुआ? रोलिंग। तो अभी ट्रांसलेशनल मोशन सबसे पहले इसमें दिखा रहे हैं, और लेट अस मार्क फ्यू पॉइंट, या वो खुद से ही मार्क करेंगे पॉइंट्स को। लेट अस सी। ओके, all the parts including the center of mass, all the part of wheel, whether this part, this part, this part, this part, every part of the wheel or every segment of the wheel is moving in forward direction with same velocity as far as its translational motion is concerned. ठीक है? But when it comes to rotational motion, different parts of the body will be having same angular speed but different translational speed, sorry, different tangential speed. ठीक है? Different parts of the wheel or different segments of the wheel while doing rotational motion will have different tangential speeds or different tangential velocity. Same angular velocity but different tangential velocity. क्योंकि सेम स्पीड से रोटेट कर रहा होगा अगर यूनिफॉर्म है तो। हाँ, या एटलीस्ट चलो नॉन यूनिफॉर्म भी है तो ओमेगा चेंज हो रहा होगा, बट फॉर एग्जांपल इस इंस्टेंस ऑफ टाइम पे अगर मैं देखता हूं तो व्हील का ओमेगा मान लो 5 रेडियन पर सेकेंड है, तो ईच पार्ट ऑफ द व्हील विल बी मूविंग विथ 5 रेडियन पर सेकेंड। So at any given instance, all segment of wheel will be moving with same angular speed, ठीक है, या angular velocity, but tangential velocity of each segment is going to be different. Is that okay? And velocity बोल रहा हूँ तो speed तो same रहेगा, but velocity different रहेगा क्योंकि सब हर जगह पे डायरेक्शन जो होगा मोशन का वो अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं यहीं पे फिक्स करके एक एक्सिस लग, सो रोटेशनल टाइम पे रोटेशनल मोशन को जब हम देख रहे हैं, angular speed at any instance is going to be same for all the segment, all the particles, whereas its tangential speeds are going to be different. Tangential velocities are going to be different. For example, ये वाले पार्ट के लिए, ऊपर वाले पार्ट के लिए अगर मैं देखूंगा तो it is going to move in this direction, this will be moving in downward direction. ये वाला पार्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ये वाला पार्ट इस डायरेक्शन में, ठीक है? ये वाला पार्टिकल जो होगा दिस इज गोइंग टू गो इन दिस डायरेक्शन। हर पॉइंट, हर सेगमेंट का वेलोसिटी जो होगा दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, ठीक है? बट ओमेगा इज गोइंग टू बी द सेम फॉर ऑल द सेगमेंट। ओके, नाउ
ठीक है, उससे फर्क नहीं। देखो एकदम स्लो मोशन में इस चीज को डिपिक्ट किया है, इट इज वेरी गुड टू अंडरस्टैंड। आवाज को छोड़ो और डायरेक्शन ऑफ मोशन को कैच करो, ठीक है। आवाज से कुछ लेना देना नहीं, विजुअल जो है दैट इज। हाँ मैं वो बता रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ पे दो एरो बने हुए हैं, ठीक है। ये दो एरो में पहला एरो ब्लू एरो जो है दैट इज इंडिकेटिंग द ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। और रेड एरो जो है या ऑरेंज एरो जो है दैट इज इंडिकेटिंग द रोटेशनल और टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर सेगमेंट एट दैट इंस्टेंट। अब ये वाला पार्टिकल रोटेट होकर के जब यहां पे आ जाएगा तो इसका डायरेक्शन ये। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इस पॉइंट को ए मार्क करते हैं, इस पॉइंट को बी मार्क करते हैं, सी मार्क करते हैं। ए वाला जब बी के पोजीशन पर जाएगा, ए वाला जब बी के पोजीशन पर जाएगा, बी वुड बी समवेयर ओवर हियर, ठीक है। ए का वेलोसिटी तब इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गया होगा, ठीक है। ए का ट्रांसलेशनल वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी एंड इट विल बी इक्वल टू VCM, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी रहेगा दैट विल बी द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ ईच सेगमेंट ऑफ द व्हील। रोटेशनल डिफरेंट है एज पर द पोजीशन, ठीक है, एज पर द पोजीशन at different points it is going to have different tangential velocity. अब net velocity यहां पर क्या होगा? Net velocity is going to be tangential velocity plus translational velocity at any point. Net velocity of any segment of the wheel will be equal to translational velocity plus rotational velocity, ठीक है। ट्रांसलेशनल प्लस टेंजेंशियल वेलोसिटी, रोटेशनल टेंजेंशियल वेलोसिटी। अभी पॉइंट क्या है कि अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम देखेंगे, ठीक है, इसके पास इस डायरेक्शन में VCM से ये चल रहा होगा, ठीक है, और उसी इंस्टेंस पर ये इस डायरेक्शन में R ओमेगा से चल रहा होगा। इज दैट ओके? टेंजेंशियल वेलोसिटी where it is rotating like this with omega, और जनरली अब इसके बेसिस पर इस पॉइंट के आर ओमेगा और VCM के बेसिस पर हमारा टाइप्स ऑफ रोलिंग डिफाइन। इट कुड बी आइदर प्योर रोलिंग और इम्प्योर रोलिंग। इम्प्योर दो टाइप से होता है, एक तो स्लिप कर सकता है, दूसरा स्लाइड कर सकता है, ठीक है, स्लिपिंग और स्लाइडिंग। इज दैट ओके? ये दो चीजें क्या होती है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन। अभी इसको फिर से थोड़ा सा आगे करके देखते हैं। ओके, सी, इसमें दूसरी चीज जो हाईलाइट करने वाली थी, ये पॉइंट जब यहां पे था, ठीक है, टेंजेंशियल वाज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन में हो गया। और लाइक इफ आई एम गोइंग टू मार्क अ पर्टिकुलर पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट को, इस ये जो पॉइंट है वाइट अभी मार्क यहाँ पर व्हील पे,
इस पर अगर फोकस करते हैं, ठीक है, we are going to see that it is going to move something like this. इस तरह से सेमी सर्कल कंप्लीट करें, ठीक है। इस तरीके से ये सेमी सर्कल कंप्लीट करेगा। जब इस पॉइंट पर होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट, इट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r, द डायमीटर, इज दैट ओके। और उस पूरे पीरियड में, और फिर आगे बढ़ेगा तो किधर आएगा, आई मीन दिस पॉइंट विल अगेन कम एट ग्राउंड, ठीक है। इस पूरे एक चक्कर में, या लेट मी स्टार्ट इट फ्रॉम, instead of taking it from, instead of considering this point, I'm now considering this point so that the entire graphic can come, पूरी चीजें एक इस पर दिख जाए। Is that okay? ये कुछ इसी तरह का दिखेगा इसका ट्रेजेक्ट्री of this particular point observed from the lowest point and completing one complete circle. एक पूरा complete circle करने पर it is going to look like this. यहाँ से यहाँ के बीच में ये कितना distance travel किया, 2 pi r, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट क्या हुआ, 2r, ठीक है। ऑब्वियसली सर्कल तो नहीं है, क्लियर है। क्या लगता है किस तरह का ट्रेजेक्ट्री रहेगा ये, हाँ, प्रोजेक्टाइल वाला, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल वाला ट्रेजेक्ट्री रहेगा। तो इफ वी आर गोइंग टू टेक इट, आई मीन ऑब्वियसली इसको हम एक प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है, वी कैन ऑलवेज डिपिक्ट दिस मोशन इन दैट फॉर्म एज वेल। किस चीज को, इसके किसी भी पार्टिकल, किसी भी एक पॉइंट को वी कैन प्रोजेक्ट इट एज, उसके मोशन को वी कैन ऑलवेज प्रोजेक्ट इट एज ये प्रोजेक्टाइल मोशन विथ अ पर्टिकुलर स्पीड, ठीक है, चलेगा। वो सारी चीजें हमारी आ जाएंगी यहाँ पे। और उस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते हैं, बट ये भी एक एस्पेक्ट है इसकी ट्रेजेक्ट्री जो होती है प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री में, ठीक है। ये चीज ध्यान में, इफ नीडेड वी कैन, हाँ। और ये पॉइंट ऑफ रेस्ट वाली बात मैं बताता हूँ थोड़ी देर के बाद। अच्छा, ऐसे में इसको, इस चीज को मैं ऐसे पॉइंट रखता हूँ, इस वाले पॉइंट के लिए द डायरेक्शन ऑफ VC एंड R ओमेगा आर अपोजिट टू ईच अदर। सपोज ये बराबर हो जाते हैं, ठीक है, वी आर अज्यूमिंग कि ये दोनों बराबर हैं फॉर द टाइम बिंग। तो अगर ये बराबर होंगे तो जो भी पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में हो, ठीक है, दैट विल बी एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट पोजीशन, इजंट इट, एट दैट पर्टिकुलर टाइम। यानी जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा रोलिंग मोशन के टाइम पर, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्योर रोलिंग, ठीक है। VC यानी VCM, velocity of center of mass, or translational velocity of the body becomes equal to rotational tangential velocity, speed basically,
तो लोएस्ट पॉइंट का नेट वेलोसिटी जो होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो एंड इट इज गोइंग टू बी एट instantaneous rate instantaneous rest while rolling. This condition is called pure roll. That means at point of contact while rolling there will be no slipping, no sliding. ठीक है? There will be no slipping, no sliding. Is that okay? और दूसरी चीज क्या होती है? स्लीपिंग एंड स्लाइडिंग. स्लीपिंग एंड स्लाइडिंग होगा, इसका मतलब क्या है? दिस इज नॉट इक्वल टू VC इज नॉट इक्वल टू R ओमेगा. ठीक है? अब दो कंडीशन होते हैं, एक चीज तो स्लाइड कर सकती है चीजें और दूसरा स्लिप कर सकती है. ठीक है? स्लाइड करने का मतलब क्या होता है? खिसकाना. नहीं, स्लाइड करने का मतलब क्या? घसीटना. राइट. घसीटने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? द ट्रांसलेशनल मोशन हैज टू डोमिनेट द टेंजेंशियल वेलोसिटी. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? तभी घिसड़ाएगा ना. इज दैट क्लियर? ठीक है ना? अब मे भी बचपन वगैरह में गाड़ी वाड़ी चलाते होगे लोग, मतलब ऑब्वियसली टॉय कार्स तो हर कोई चलाता है, टॉय कार्ट. उसमें अगर हम तेजी से उसको खींचते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन डोमिनेट करता है, तो चक्के इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग, मतलब थोड़ा थोड़ा रोटेट भी कर रहे होते हैं, वो स्लाइड करने लगते हैं. ठीक है? तो स्लाइडिंग इज व्हेन VCM is greater than R omega at point of contact. Point of contact with surface. ठीक है? और दूसरी चीज होती है स्लिपिंग. स्लिप कब करेगा? स्लिप करने का मतलब आगे की तरफ खिसकता जा रहा है. द रोटेशनल मोशन इज डोमिनेटिंग द ट्रांसलेशनल मोशन. इज दैट ओके? VCM is less than R then at point of. क्या बेटा? हाँ, अच्छा, स्लिप का एग्जांपल. नहीं, वो मत सोचो. हाँ, डाउन द हिल्स करता तो है स्लिप ही. एंगुलर स्पीड इज गोइंग टू डोमिनेट द लीनियर स्पीड और ट्रांसलेशनल स्पीड. इट इज गोइंग टू फॉल फास्ट. फॉल फास्ट मतलब यहाँ पर बेसिकली हो, ये मोशन का और डिटेलिंग हम थोड़ा सा करते हैं. सेंटर ऑफ मास जो है एट एवरी इंस्टेंस आगे की तरफ फॉल करता है स्लाइटली, एंड दैट इज गोइंग टू जनरेट अ टॉर्क. ठीक है? और दूसरा टॉर्क फ्रिक्शन क्रिएट करता है. और इसका टॉर्क जो होता है वो काउंटर बैलेंसिंग टॉर्क होता है सेंटर ऑफ मास, और फ्रिक्शन की वजह से ये मोशन. ठीक है? I'm thinking of example. हाँ, देखो, स्लीपिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है मड वर्ड में. ठीक है? जब गाड़ी का चक्का फंस जाता है, ठीक है ना, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्लीप. ठीक है?
मैं सोच रहा था कौन सा एग्जाम्पल लो जो बेस्ट सुटेड हो और क्लियरली विजिबल हो। पहले सोचा आइस वाइस पर चला करके बता दूं, लेकिन फिर लगा नहीं, एक लाइव एग्जाम्पल अच्छा रहेगा, तो इट विल समथिंग जो आपके दिमाग में बैठा रहे। तो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। वहां पर ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है हमारा, दैट इज डोमिनेटेड बाय रोटेशनल। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं, ठीक है। और मतलब अभी तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड, वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट इट। ओके, ये येलो लाइन जो दिखाया है इन्होंने, दैट इज द नेट वेलोसिटी, ठीक है। वेक्टर सम ऑफ वेलोसिटी एट थ्री डिफरेंट पॉइंट्स एट अ गिवन इंस्टेंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और जो ब्लू और ये रेड लाइन थे, उन दोनों का वेक्टर सम जो है वो ये येलो लाइन के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जीरो रहेगा, तो कोई कुछ भी नहीं, मतलब रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी सारे पॉइंट्स के लिए दे have। ओके, चलो। ये चीजें जो हमको इसमें समझनी थी इस मोशन के रिगार्डिंग, दैट इज, you're right. Your tone influences how readers respond. Frame repeat. Let us come back. ओ, ठीक है, चलेगा। अभी तक वो कितने सेगमेंट्स में ये हुआ था ना? F, E, हाँ, सेम रो, and physically observe them most themselves can be
seen as vector sum of vector sum of translational motion. Vector sum of translational motion of the wheel rotational motion of the wheel angular velocity. ठीक है हाँ अच्छा वेक्टर नहीं नहीं मोशन का वेक्टर सम बोल रहे हैं मोशन का वेक्टर सम का मतलब ये ऑब्वियसली वेलोसिटी वेक्टर्स को ऐड करेंगे हम ऑफ ईच पॉइंट ठीक है नहीं एंगुलर टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड बीसीएम ठीक है मैं खाली इसको पर्सपेक्टिव में मुझे लगा रोटेशन द translational velocity of wheel will be seen for all the segments of the wheel. That is, all parts of wheel will have same translational velocity which will be same as same as velocity of the velocity of center of mass of the for rotational
motion of wheel about its axle, the angular velocity of, of every component plus part of the wheel will be precisely same. However, tangential velocity of different segments. क्या हुआ बेटा? क्या करना है? ठीक है, क्या हुआ? फिर स्विंग हो गया? बस जब स्विंग नहीं चाहिए तो स्विंग, और जब स्विंग चाहिए तो स्विंग नहीं। अभी ठीक है? But however, tangential velocity of different segments plus parts of the wheel will be different. अच्छा, what about speed, speed of different components या different segments, वो सेम होगा या अलग अलग of a wheel? हाँ, पक्के से बात बोलो। स्पीड भी हर सेगमेंट का सेम नहीं है, रेडियस अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग हो सकता है ना। अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूं और इसी तरह के स्टेटमेंट पूछे जाएंगे, ठीक है, रिम के सारे पॉइंट्स का स्पीड सेम है? यस है। ठीक है, ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द व्हील, उन पॉइंट्स का स्पीड सेम रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी किसी का सेम नहीं रहेगा क्योंकि डायरेक्शन सबका अलग अलग रहेगा। ठीक है, बट स्पीड इक्वल डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट्स है सेंटर ऑफ द व्हील से, उन सबका स्पीड जो होगा, टेंजेंशियल स्पीड भी, नॉट ओनली एंगुलर बट टेंजेंशियल स्पीड भी जो होगा, दैट इज गोइंग टू बी द सेम, बट डायरेक्शन इज गोइंग टू बी डिफरेंट। वो मैं ब्रैकेट में लिख के दे रहा हूँ। Tangential velocity of different segment parts of the wheel will be
different ब्रैकेट में, but tangential speed of segments equidistant from center of wheel will be same. ठीक है, so V tangential vector will be equal to R omega या omega cross R. टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या रहता है? R ओमेगा ओमेगा क्रॉस R, ओमेगा क्रॉस R. पक्के से पढ़ा था, लिखा भी था. गुड. याद है कि नहीं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट. याद एंड आई एम हैप्पी. ठीक है. सो VT tangential is equal to omega cross R vector, और R vector is going to be changing vector. ठीक है, इसलिए VT वेक्टर कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा. ओमेगा वेक्टर जो रहेगा इसका डायरेक्शन बेसिकली सेम रहेगा. ठीक है, ओमेगा का डायरेक्शन सेम रहेगा. एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन हो सकता है. तो वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट इट, बट वन थिंग वी आर वेरी श्योर ऑफ कि अगर ओमेगा चेंज नहीं भी करता है मान लो, तो भी आर के चेंज होने की वजह से VT इज गोइंग टू डेफिनेट. ठीक है, और स्पेशली द डायरेक्शन ऑफ आर इज कंटिन्यूअसली गोइंग टू चेंज, देयरफॉर VT इज कंटिन्यूअसली. सॉरी, फिर से बोलिए बेटा. डिफरेंट होना चाहिए ना. परपेंडिकुलर ले रहे हो आप ना. आर सबका अलग अलग हो जाएगा, डायरेक्शन भी ना. देखिए ना, टेक दिस व्हील. ठीक है, आप बेसिकली इस व्हील पर ये एक पॉइंट मार्क कर रहे हो और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हो. तो ऐसे. ओके, मैं वर्टिकली उसको अभी थोड़ा सा. टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम रहेगा. तो डायमेट्रिक पॉइंट्स जो भी होंगे, किसी भी एक डायमीटर पर लाई करने वाले जो पॉइंट्स होंगे उनका नहीं सेम होगा. सॉरी, सेंटर की इस तरफ मूव कर रहे होंगे ये तो ध्यान नहीं. और यहाँ पे इस तरफ, तो ये भी सेम नहीं.
हम वहां से सेंटर से लेकर के वहां रिम से लेकर के सेंटर तक के जो पॉइंट्स होंगे किसी भी साइड में उनका डायरेक्शन से दूसरे साइड में डायरेक्शन डिफरेंस। यार इसमें डायग्राम तो मैंने बनाया नहीं है। एक काम करता हूँ अभी बना रहे एक लेके। हाँ बोलो बेटा। हाँ बेटा यू कैन लीव। ठीक है। each part of the body is going to move with same velocity as far as translational motion is concerned. Is that okay? ये वाला लाइन थोड़ा छोटा हो गया। नेवर माइंड। इधर वाले पॉइंट्स का भी that is what we saw over there. Translational motion आप लोग के लिए जरूरी नहीं है बनाना। ठीक है। अगर वो विजुअल्स याद है वो याद रहेगा इतना भी मुश्किल नहीं। ठीक है। velocity translational velocity is equal to vcm for each part of the wheel. For each part of the wheel. By the now this is rotating like this. This part will have a angular speed or tangential speed vt vector is equal to omega vector cross vector. This point it is going to be like this. For this point it is going to be like this. This point it is going to be like this. Theta. So rotational motion velocity in part of wheel
the translational motion, the rotational motion, and sum of these two motions is depicted in above diagram. Next point over here is the net v vector of a point on the wheel which is in contact with surface will be mod is equal to VCM minus point diametrically opposite to point of contact of the wheel. Will be v vector mod is equal to VCM mod plus mod omega cross r vector. Next thing is आई थिंक मैंने उस दिन जितनी चीजें पढ़ाई थी ना वो सारी चीजें एक पेज पे आ गई. I'm skipping one number. बाद में मैं इंसर्ट करके ऐड. ज्यादा तो न्यूमेरिकल से किया था. हाँ, दो ही क्वेश्चन किया था. वही तो भी लगा कि भूमिका दो ही क्यों बोल रही. गलत सुन लिया.
क्या हुआ बेटा? कौन सा? ये ना, हाँ काइंड ऑफ, लगता तो है मुझे, या दीवार हो, दीवार। हाँ, उस पे है। नहीं, सॉफ्ट बोर्ड नहीं है ये, नहीं जाएगा। उधर वाला जो है वॉल ना, वो बेसिकली पार्टीशन है, पर वो प्लाई है। प्लाई उधर नहीं बुद्धू, सामने जो। बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन द translational speed and sorry, translational velocity, not speed, and tangential velocity vt equal to omega cross r vector, the point of contact of wheel with surface. The rolling क्या हुआ? Based on translational and tangential velocity of the point of contact of the wheel with the surface, the rolling motion of wheel can be classified as a number pure, क्या हुआ? Pure rolling motion, and the key idea over here is VCM mod should be equal to
omega cross r mod. Is that okay? Second one is rolling motion with sliding. Pure rolling with hello. हाँ भेज सकते हो आप अभी भी with sleeping. Good morning, sir. ग्रुप पे डाल उनको जल्दी आओ डबल पी आएगा ओके थैंक्स ये हमारे सारे की पॉइंट्स कैप्चर हो गए जो हमने डिस्कस किया था अभी क्या let us talk about kinetic energy of a body under rolling motion ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू बी इसके पास दो तरह का मोशन है ट्रांसलेशनल है और दूसरा क्या है रोटेशनल है if we are going to add rotational kinetic energy and translational kinetic energy then I will get the total kinetic energy of the body while doing rolling motion. Is that okay? Kinetic energy of the body under क्या हुआ बेटा वेलकम ओए सुनो तुम दोनों kinetic energy of the body under rolling so total kinetic energy A total will be equal to
translational K plus rotational K. Is that okay? This will be equal to half m into VCM square plus half I omega square व्हील है, ठीक है ना। व्हील का मतलब क्या हो गया, रिंग। ठीक है, अगर डिस्क दिया हुआ है कि हमारा व्हील इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, तो फिर डिस्क लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग। ठीक है, बाकी उसके छोटे छोटे स्पोक्स होंगे ऑफ नेग्लिजिबल मास कंपेयर टू दैट ऑफ द रिंग। ठीक है, सो फॉर a wheel in ring form, A total will be how much? Half m VCM square plus half into mr square omega square. That will be half mvcm square into half mvcm square, assuming it to be a pure rolling motion। ठीक है, ये वाली वैल्यू रहेगी। और अगर हम इसको प्योर रोलिंग मोशन कंसिडर करते हैं तो फिर आर ओमेगा विल बी इक्वल टू VCM। तो हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सी एम स्क्वायर विल बिकम एम वी सी एम स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आई जो होता है ना, दैट इज ऑलवेज आई सी एम। इज दैट ओके? यहाँ पे यहीं पे लिख लेते हैं फॉर प्योर रोलिंग। ठीक है, और इम्प्योर रोलिंग होगा तो आर ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो VCM से बड़ा या छोटा है। ठीक है, हाउएवर जब प्योर रोलिंग हो रही है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा दैट विल बी पॉइंट ऑफ रेस्ट। ठीक है, प्योर रोलिंग जब हो रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द पॉइंट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेस्ट। ठीक है, और इस सिनारियो में एक्चुअली हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि माय व्हील इज, अरे यार एक चीज रह गया लिखना,
चलो इसके बाद लिखूं, तो इससे मैं ध्यान कर रहा था कि लिखूं गुड मॉर्निंग ट्रेजेक्ट्री का मुझे लिखना था, बता तो दिया था। हाँ, सो क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? फालतू फालतू का रीजन दे रहा है। Point of contact is instantaneous, point is a point of instantaneous rest. ठीक है, and we consider this rolling motion to be taking place instead of at the fixed axis which is passing through the center of mass, के बदले point of contact जो है वहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन लेकर के, और अगर व्हील को हम रोटेट करते हैं, इज दैट ओके? देखो, रियलिटी मतलब हमने ये बोला कि रोलिंग मोशन ऑफ द व्हील इज सम टोटल ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ द व्हील। ठीक है, अब जब वो रोल कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है सरफेस के साथ, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एट रेस्ट, though the points are going to be different at different instance, but that particular point is going to be addressed, whichever point is in point of whichever point is behaving as a point of contact between the wheel and the surface, that point of the wheel will be at rest, instantaneous rest. Okay, and wheel is rotating, is that okay? So what we consider is कि और ये कंसिडरेशन बेसिकली इस एनर्जी इक्वेशन से आता है, दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट। ठीक है, द व्हील इज रोटेटिंग अबाउट this axis of rotation, the instantaneous axis of rotation, which is passing through the point of contact. Is that okay? We consider our circular motion or rotational motion of the wheel to be taking place about the instantaneous axis of rotation which is passing through point of rest, that is point of contact between the wheel and the surface. Is that okay? हाँ, तो प्योर रोटेशनल होता तो ये मेरा व्हील है, ठीक है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ रहता? यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे घूमता रहता। इसको सरफेस पे लाके रख दिया अगर मैंने, सरफेस पर ला करके रख दिया तो क्या हो रहा है? Instead of this O being the point through which the axis of rotation is passing, we now assume that this point, this point, whichever point is in point is the point of contact, I'm assuming it to be A. This point is going to work as instantaneous axis of rotation and it will keep on changing. ठीक है, तो इस इंस्टेंस पे ये ए पॉइंट है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो पॉइंट होगा ए डैश वो हो जाएगा, उसके थोड़ी देर बाद ये ए डबल डैश जो है वो पॉइंट, पॉइंट ऑफ
कांटेक्ट होगा एंड साथ साथ वो पॉइंट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होगा, ठीक है। एंड दिस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन क्या रहेगा? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन is going to remain the same. Is that okay? About center अगर वो ओमेगा स्पीड से मूव कर रहा है तो अबाउट दिस पॉइंट भी वो ओमेगा स्पीड से ही मूव, ठीक है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? सो दिस थिंग इज गोइंग टू बी इक्वल टू ओमेगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने शिफ्ट कर दिया। एक्सिस ऑफ रोटेशन शिफ्ट किया, इसका मतलब क्या हो गया? आई विल गेट शिफ्टेड और चेंज्ड, राइट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल गेट चेंज्ड। क्या हो जाएगा? अगर ये रिंग है तो फिर क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, दैट इज 2 mr², ठीक है। और दैट इज माई न्यू आई डैश बोल सकते हैं, विच इज आई सी एम प्लस mr²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल लिया हम लोगों ने। अब 2 mr² हो गया एंड काइनेटिक एनर्जी रोटे, अब यहाँ पे जो है देयर इज नो ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन एनीमोर, इट इज जस्ट द रोटेशनल मोशन विच इज देयर, ठीक है। ट्रांसलेशनल को हमने सुपर इम्पोज कर लिया है इस पे, और उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की एक्सिस ऑफ रोटेशन को शिफ्ट कर दिया, it became instantaneous axis of rotation and now it is just rotating, ठीक है। so the total kinetic energy of this body will thus become TKE half I dash omega square, is that okay? I dash is equal to ICM plus MR square, right? I के बदले में वैल्यू रख देते हैं 2 mr² omega square, this becomes m VCM²। ये बात समझ में आ रही है? एंड इट विल होल्ड ट्रू फॉर ऑल सच केसेस, ठीक है। मेकिंग सेंस? क्या? हाँ, प्योर रोलिंग मोशन। प्योर इम्प्योर रहेगा तो इट वोंट बी, आई मीन द वैल्यूज आर गोइंग टू बी बिट, हाँ। So we are discussing the case of pure rolling. Is that okay? So total kinetic energy can also be expressed as I dash half I dash omega square, where I dash is equal to ICM plus M D square, where D is instant distance of center of mass from instantaneous axis of rotation. Is that okay? So the total kinetic energy can either be this, ठीक है, or it could be सबकी ये जनरल फॉर्मूला। यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन ले लेंगे, ठीक है।
आर के बदले आर डायरेक्शन ले लेंगे ना, तो फिर इट विल बिकम ट्रू फॉर ऑल द मशीन्स, और ये रेडियस ऑफ डायरेक्शन ही रहेगी। ये जो इसके केस में रेडियस है, दैट इज रेडियस ऑफ डायरेक्शन। क्या हुआ बेटा? एम डी स्क्वायर is distance between हाँ, या फिर ए trajectory of any other point on the wheel will be any other point, matlab other than center of mass. Is that okay? That is point other than mass on the wheel will be parabolic is equal to 2r and arrange
not arrange, the word is going to be different. It is distance covered in one rotation. क्या हुआ? लिख दिया? हाँ, कोई भी पॉइंट बेटा अदर देन सेंटर ऑफ मास. In one rotation. Distance. Horizontal distance covered in one rotation is equal to 2 pi. ठीक है, पढ़ा. हाँ, आज का पढ़ाई यहीं पे खत्म रहे करते हैं. पढ़ने वाला काम बाकी जो है, इसका लास्ट सेगमेंट वो नेक्स्ट कल के, और फिर विल बी स्टार्टिंग विद ग्रेविटेशन. Okay, sir. So can I leave? नोट कर लिया.